Morning students, this is the second lecture of binomial theorem. इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस वाई होल रेज टू द पावर n. इस एक्सपेंशन में आप देख सकते हैं एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है. एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन दिस चैप्टर इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n. इसे हम असेंडिंग पावर्स ऑफ x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ x की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है. Now the general term of a plus b raised to the power n. tr plus 1 फॉर्म में हम जनरल टर्म को लिखते हैं which can be expressed as ncr a raised to the power n minus r b raised to the power r. r को 0 1 2 3 4 जनरल टर्म्स पुट करने से we get the required term. r को 0 पुट करने से we get the first term और r को 1 पुट करने से we get the second term. इसी तरीके से r को n पुट करने से we get the r plus 1 term. Kth term from the end is n minus k plus 2th term from the beginning. तो एक एग्जांपल करते हैं. Let's find the sixth term in the expansion of 4x minus 5 raised minus 5 by 2x raised to the power n, and if we require we can also find its fourth term from the end. Let us only solve for the sixth term from the beginning. So write the formula tr plus 1, which is a general term formula, and in this general term formula we put r is equal to 5 so that we get the sixth term. By putting r is equal to 5 we get the sixth term of this expansion, which can be easily calculated. Now if required we can also find the fourth term from the end in this expansion. We have n is equal to 9. By putting the formula 9 minus 4 plus 2th term from the beginning could be easily calculated. Now the middle term. मिडिल टर्म में दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. n या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है. जब n इवन होता है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड बनती हैं, दैट इज n plus 1 विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स. उस केस में सिंगल मिडिल टर्म बनती है, दैट इज n plus 2 by 2th term विल बी द मिडिल टर्म. और जब n ऑड होता है तो दो मिडिल टर्म्स बनती हैं, n plus 1 by 2th term एंड n plus 3 by 2th term. नाउ द ग्रेटेस्ट टर्म. ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब कि जो भी हमारी एक्सपेंशन है उसमें अगर हम जनरल टर्म को ग्रेटेस्ट टर्म मान लेते हैं तो वो अपनी प्रीवियस टर्म से भी बड़ा होगा और अपनी सक्सेसिव टर्म से भी बड़ा होगा. तो वी कैन सॉल्व फॉर tr plus 1 by tr greater than equal to 1 but in the modulus. So we are not bothered about the negative or the positive value. We are bothered about the maximum value, that is the greatest term in this expansion. Thank you.